Okay, so Bacho, we are going to discuss the type 2 of the solutions of Kc. And in this type, I told you that the value of Kc is given. If the value of Kc is given, then the criteria to solve the question is different, right? So let's see how can we solve this. So here we have equation given to you on the screen, and calculate the amount of HI. We need to find out the amount of HI at equilibrium over here when 1 mole of hydrogen and 1 mole of iodine are going to be mixed in the container of 10 decimeter cube. These are the informations that are given to us. And we know that, but so what we need to start with, we need to start with the ice. Okay, so what is ice? Ice means initial moles, and initial moles are given to us 1 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen. Oh, sorry, iodine, right? And we know that initially the product is 0. The number of moles of product is 0. Then change. Exactly. Over here, the problem is, but so what is the problem over here? The problem is we don't have the number of moles at equilibrium. हमारे पास equilibrium पर moles मौजूद नहीं है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम किस तरह चेंज निकालेंगे? हम किसी भी एक का चेंज नहीं निकाल सकते हैं, और जब हम किसी भी एक का चेंज नहीं निकाल सकते हैं तो हम किसी और का चेंज भी नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे ही है बच्चों? जी सर। अब हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? व्हाट वी नीड टू डू इन सच सिचुएशंस बच्चों, वी नीड टू कंसीडर द वन ऑफ द चेंज एज x, ठीक है ना? अब वी डोंट नो हाउ मच हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी कंज्यूम, सो वी आर जस्ट कंसीडरिंग दिस कि यार x हाइड्रोजन कंज्यूम होगी, वी डोंट नो कितनी कंज्यूम होगी, वी आर जस्ट कंसीडरिंग कि यार h कंज्यूम होगी, ठीक है ना? देन यू कैन सी इन द इक्वेशन that the number of moles of hydrogen and iodine are same. So you need to keep remember, whatever the amount of hydrogen is consuming, definitely the same amount of iodine would be consumed. So if x hydrogen is consumed, then x iodine would be consumed. And also you need to see this, that if 1 mole of hydrogen is consuming, then 2 moles of hydrogen iodide is formed, right? If 1 mole of hydrogen consumed, then 2 moles of hydrogen iodide would be formed. It means if x hydrogen is consuming, then 2x hydrogen iodide would be formed, right? But or not? Yes, sir. Then if you talk about the reactants, so what we need to do, if reactants, you talk about reactants at equilibrium, so we know that we need to subtract the value, and if you talk about the number of moles of product at equilibrium, then you need to add over there. So what should be the answer over here? It should be 1 minus x, and it is also 1 minus x, and it would be 2x, right, Bacho? Yes, sir. Yes. And if you talk about the concentration at equilibrium, so we know that number of moles over volume, and the volume for for all of them would be 10. So it should be 1 minus x over 10, 2x over 10. Right, Bacho? This would be the concentration, right? Yes, sir. Then we know the expression for Kc. It is all the time concentration of product with raised to the power of their coefficient, and over the concentration of reactants with raised to the power of their coefficients. जी बेटे। सर आप जो हाइड्रोजन के लिए आपने कंसंट्रेशन लिखी है, उसमें आपने 1 minus x लिखा है या फिर 1x लिखा है? Yes, it is 1 minus x. Yes. Right. So now Kc key expression is all the time the concentration of product with raised to the power of their coefficient over the concentration of reactants with raised to their power of coefficients. Now we can put the values, right? So what is the value of Hi? It is 2x over 10 square. And if you talk about the value of hydrogen and iodine, so they are like 1 minus x over 10, 1 minus x over 10, right? But so we can even write like this, if you don't mind. So I think we can write like this, 2x over 10 whole square, or we can write 1 minus x over 10 whole square. Can I write like this, Bacho? Yes, sir. Or if you don't mind, so can I write the value of Kc over here, which is 49? Right. Yes, Bacho, is that right? Yes, sir. Oh, where is my whole solution gone?
Okay, just give me a minute, बच्चों. Just let me check. So, बच्चों, if I'm just writing like this, for suppose if I'm just putting the value of Kc over there, which is 49, so it would be like this. And if I'm just considering the whole square over there, so it would be right, if you don't mind. So can I write like this, bachcho, the whole square? Yes, sir. If you don't mind, so can I cut these two, bachcho? 10 over 10, दोनों जगह 10 मौजूद है, तो क्या मैं इन दोनों को काट सकता हूँ? Yes, sir. And if you don't mind, so can I write the 7 का square 49, and it would be 2x over 1 minus x का whole square. Can I write like this? लिख सकता हूँ बच्चों ऐसे? Yes, sir. Then you know that if both the square on both sides of is equals to, then we can cut these two, and it would be like 2x over 1 minus x, and it would be plus minus 7, right? Then we need to solve it for one for plus and one for negative. Let's see. So it should be 2x over 1 minus x is equals to plus 7, and it may be 2x over 1 minus x is equals to minus 7. So it can be right like this, 7 into 1 minus x, and it would be 2x is equals to 7 1 the 7, and then 7 8 7x, and then I just need to send 7x over here, so it would be 7x plus 2x is equals to 7, and then it would be 9x is equals to 7, and the value of x would be 7 over 9. Write that, bacho, or not? Yes, sir. So what should be the answer if I solve it 7 by 9? If I divide 7 by 9, so what will be the answer? It would be 0.778. Right, bacho? Yes, sir. And let's check for this one. It would be 2x is equals to minus 7, 1 minus x. It would be 2x, it would be minus 7, and minus plus, it would be 7x. And we just need to send 7 over here, so it would be plus 7, and 2x over there, so it would be 5x. And if you talk about x, so it would be 7 over 5. So what would be the answer of x now? It would be 7 over 5, and it is giving us 1.4. Right, bacho, or not? Yes, sir. Now you just need to look at over here how many moles initially we have. Initially, we just have 1 mole of hydrogen. Initially, we just have 1 mole of hydrogen. So if we are consuming hydrogen, so it would be somewhere less than 1. जो भी hydrogen आपके पास consume होगी वो 1 में से consume होगी ना. It should be less than 1. So what should be the right answer? The first one or the second one? The first one should be the right answer. आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है. अब 1 मोल हाइड्रोजन गैस में से 1.4 तो कंज्यूम नहीं हो सकती ना. So it is wrong one. Right, बच्चों? So we would consider this value as the right value. Got it, बच्चों? सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे ये वाली बात. Just look at over here ना. Initially we have 1 mole of hydrogen. We have 1 mole of hydrogen. So if hydrogen is consuming, change का मतलब क्या है? Hydrogen consume हो रहा है. ठीक है ना. जब हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो 1 में से ही कंज्यूम होगा ना. 1 से मतलब 0.5 खर्च हो सकता है, 0.7 खर्च हो सकता है, 0.9 खर्च हो सकता है, 0.99 खर्च हो सकता है, बट 1.4 तो खर्च नहीं हो सकता ना. आपके पास अगर आपके पास 5 रुपए हैं तो आप 5 रुपए खर्च कर सकते हो, तो आप 10 रुपए तो खर्च नहीं कर सकते ना. जी सर, गॉट इट. ये बहुत छोटी बात कर दी है. 5 रुपए का तो कुछ भी नहीं आता दुनिया में, लेकिन फिर भी अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो आप 5,000 रुपए ही खर्च कर सकते हो, या 4,500 खर्च कर सकते हो, या आप फॉर सपोज 3,000 रुपए खर्च कर सकते हो, बट आप 7,000 रुपए उसमें से खर्च नहीं कर सकते. सो दिस इज द सेम थिंग. अगर आपके पास 1 मोल है, यू कैन यूज 0.778 मोल्स, बट आप 1.4 यूज नहीं कर सकते उसमें से. सो दिस इज द रॉन्ग वैल्यू एंड 0.778 इज द राइट वैल्यू. सो यू कैन यूज इट नाउ ओवर हियर. Just look at over here. If you have 1 moles and you are consuming 0.778 moles of hydrogen, तो बच्चों आपके पास कितने moles बचेंगे इक्विलिब्रियम पे? Just like let's check this. 1 minus 0.778. So it would be आपके पास इक्विलिब्रियम पे बचेंगे बच्चों 0.222. राइट. उसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड का हमें अमाउंट मालूम करना है, so it would be double of this. So we can multiply
0.778 by 2. So you can see this, the amount of hydrogen iodide at equilibrium should be 1.556. Right, bacho? Yes, sir. Any problem to any one of you? All clear? Yes. Yes, sir. तो ये एक बहुत अहम सवाल है आपके पास, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। ये इस तरह सॉल्व होता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, और इस तरह के सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। राइट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. चलें, तो अभी हम देखते हैं एक और कोई पास पेपर्स का टाइप क्वेश्चन कि हमारे पास पास पेपर में कुछ इस तरह के सवाल मौजूद हैं या करें। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है? जस्ट लुक एट ओवर हियर. Here we have the carbon monoxide for use in the production of methanol may be formed by this reaction, carbon dioxide with hydrogen, and the Kc value is already given. So how can we solve this? Change in moles. Change in moles are not given to us, and even not moles at equilibriums are given. So we need to consider it. कि भाई X consume होंगे, तो whatever the consuming of carbon dioxide, definitely the consumption of hydrogen will be same, and the number of moles of carbon monoxide and hydrogen or water is also same, right? So they all are same. So what we need to do at equilibrium, we need to subtract. So 0.7 minus X, 0.7 minus X, and it should be added 0.3 plus X, 0.3 plus X. अच्छा देखें बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन का जो वॉल्यूम है ना, अगर आप चाहें तो इसमें पुट कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप छोड़ दें। 1 डेसीमीटर क्यूब ही है, एक पहली बात। तो दूसरी बात ये कि दोनों की तरफ मोल्स सेम है, तो वॉल्यूम ऊपर और नीचे जो है ना वो कट जाएगा। तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। अगर देखें आप फॉर सपोज कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास और जो है हाइड्रोजन है नीचे, ठीक है ना, इसी तरह आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर है ऊपर ना, ये मोल सेम है। तो व्हाट एवर द वॉल्यूम over here and what are the volume over here, volume over here, volume over here, the both can cancel with each other. So आप ना भी लिखें तो चलेगा अगर number of moles same है। तो अगर different है so you need to use the volume over there, क्योंकि फिर आंसर चेंज होगा। ठीक है ना, अभी मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि number of moles दोनों तरफ same है, so I'm just doing it straight away, right? So what should be the Kc? Kc should be the product की concentration, it should be 0.3 plus x का whole square, दोनों एक जैसे हैं, और over reactant concentration दोनों एक जैसे हैं तो whole square, and the value of Kc is 1.44. So 1.44 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? I think it would be 1.2. 1.2 होगा बच्चों? Yes, sir. So I can consider this one like that. मैं इसको इस तरह कंसीडर कर सकता हूँ, then 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा और बचेगा कि आपके पास 1.2 प्लस माइनस में। तो मैं इसको सिर्फ प्लस में सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस में बहुत कम आंसर आता है, राइट? प्लस में ज्यादातर आंसर सही आता है ना। लास्ट टाइम के जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए सब में प्लस में आंसर ही आ रहा था, तो इसमें मैं डायरेक्ट प्लस में कर रहा हूँ। आपने माइनस में किया दैट्स फाइन, लेकिन आप प्लस में करके देख लेते हैं क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं। सो 1.2 into 0.7 minus x is equals to 0.3 plus x. सो ये हो जाएगा आपके पास 1.2 को अगर हम 0.7 से मल्टीप्लाई करें, so let's see क्या आंसर आता है। 1.2 into 0.7, so it is 0.84. 0.84 minus 1.2x is equals to 0.3 plus x. अब ये 1.2 को मैं उस तरफ भेज देता हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो इट वुड बी 2.2x, और 0.3 को मैं इधर भेज देता हूँ ताकि यहाँ पर माइनस हो जाए, तो इट वुड बी 0.54, and the value of x would be 0.54 divided by 2.2, so it would be 0.2454. ये आंसर आ रहा है बच्चों आप लोगों का, and this is the right answer. You can see this, the number of moles are 0.7, तो इतने खर्च हुए हैं आपके पास 0.2454, ये भी 0.2454 खर्च हुआ होगा, और 0.2454 बना होगा, 0.2454 बना होगा। They are saying calculate the amount in moles of each substance present in the equilibrium mixture. तो ये बस ये पूछ रहे हैं आपसे, ये आंसर्स पूछ रहे हैं, ठीक है ना। So we can solve this कि भाई क्या आंसर होगा। 0.7 minus 0.2454, so it is 0.4546, 0.4546, इन दोनों का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 0.4546, और ये क्या होगा आपके पास? 0.3 plus 0.2454, it would give you 0.3
0.5454. It is also 0.5454. Is that right, बच्चों? ठीक है बच्चों? Is that right? Yes. Any Yes, problem sir. to any of you? चले, मैंने आप लोगों को जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिए हैं सारे क्वेश्चंस।